एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम 10 बजे लाइव आने वाले थे, बट अराउंड 10:30 की ऊपर हो चुके हैं, 10:40 हो रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हम लाइव आ चुके हैं एंड हमेशा की तरह अगेन आपके क्वेश्चंस लेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं। सो एक बार मैं ये लाइव का लिंक मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, बिकॉज कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ग्रुप में लिंक नहीं शेयर करते। ओके, सो यहाँ पे मैं ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ। हे नाना, मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट मतलब 90%, 10% रिमेनिंग है, वो भी हो जाएगा थोड़ी देर में। हर्षा इज आस्किंग मेक वीडियो इन इंग्लिश। हर्षा, श्योर। Harsha, you can let me know like which content you want or what information you need in English, like it's related to clinical or it's related to what. Sheetal, there is an Telegram group. You can check in this video, there will be description, right? डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। सो वहाँ पे जो भी वीडियोस होते हैं या जो भी अपडेट्स होते हैं तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। ऋषभ इज आस्किंग, सर पीजी डीएम इन बिजनेस एनालिटिक इज गुड टू डू और गुड टू गो। ऋषभ, व्हाट्स योर current educational background or are you a working professional? First tell me, then accordingly I'll suggest you. BCA, working in HCL Tech. Okay. So you are working as an, what's your current role, Rishabh? Harsha is telling, I want to know about clinical SaaS completely in English. I found all your topics are suitable for me, but I can't understand your language. Okay, Harsha, I'll make sure in the coming videos I'll make videos in English. And Harsha, meanwhile, tell about yourself as well. You are a student or working professional. Moshin is asking, make video on SAP PP. Okay, Moshin. Samiksha, 3 interviewing clinical SaaS I have appeared, but one thing, what mistake I'm doing not getting the feedback. Samiksha, you can again connect to me, okay, and we can have a discussion over that. Maybe I can help you again. Chakri is asking, sir, how's your health? Chakri, my health is very good, okay, compared to few days back. I think on last Sunday, my health was like at like I was feeling kind of little bit very weak, okay, because it was viral fever or what so on. I was not knowing, but I was feeling like shivering, okay, due to cold. But now I'm good. Rishabh is telling his role is associate, but okay, that is fine, that's your role, but what is your actual work? What are you doing there? Okay, are you analyzing data or
Are you doing like developing any application? Are you helping in project? What are you doing there? I'm asking about that. Swapnil is telling, hello sir, I'm working in CDM. Should I learn SaaS to get more growth and salary? Which skill needs to improve in CDM? Okay, so people working in CDM and especially on SaaS, just confirm in the comment, Swapnil, are you working on SaaS in CDM? Okay, so if you're working on SaaS in CDM, then it becomes easy to like switch to clinical SaaS or statistical programmer. And yeah, there is a difference of salary. The salary of statistical programmer is little more compared to CDM. Okay, and what skills you need to have, you should able to create SDM Adam table and listings. Okay, and you should be like aware about this SDM specs and mock shells, SAP document. Okay, so these skills you need to have if you want to switch to statistical. And which skill is required to improve in CDM? Okay, especially I'm not much aware the CDM task. Okay, but most probably, see in CDM there are multiple roles I found, because few of my students got selected in CDM as well, in LabCorp and different companies. So basically, as in statistical programmer, whatever data we are getting now, we are getting from the CDM team. The CDM team is finalizing the raw data. They are making sure the raw data is correct in a structured way. Then we are getting the final raw data, and then as a statistical programmer, we'll standardize the raw data into SDM data set, SDM data into Adam, Adam data to table and listings. This will be the flow. Okay, if not working on SaaS, then first and foremost thing is you need to learn SaaS base, advanced, clinical, and then SDM Adam table listings, these things. Anjali, what do accept openings for freshers? Anjali, I think last to last month the openings were there. Now the openings will take again 1-2 months maybe, and then again openings will be there, because 1 month back a lot of openings were there in clinical SaaS. Shaunak is telling, sir, I'm mechanical engineer and I'm working in operation maintenance department in natural gas field. अभी सर सैप सीखना सही होगा, अगर होगा तो कौन सा मॉड्यूल बेटर होगा? Sorry. So Shaunak, what I'll suggest you, सैप सीखना तो सही होगा, बट अपार्ट फ्रॉम सैप आप थोड़ा और एक्सप्लोर करो. इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है. अगर आप स्पेशली सैप पे मूव करना चाह रहे हो या उसको सीखना चाह रहे हो, तो देखो आपका करंट जो रोल है, क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है आपको? करंट जो आप काम कर रहे हो उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? अगर बेनिफिट मिल रहा है तो सैप सीखो, नहीं तो मैं बोलूँगा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है. जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, ओके, CRM हो गया, और एक ERP हो गया जिसकी आप बात कर रहे हो, SAP. तो पहले ये फिगर आउट कर लो कि मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, फिर आप सैप पे आओ. Lata is asking, hi sir, can you do video on how to learn SDM and Adam standards? See, SDM and Adam is like, it is like learning it by just seeing from the document, it is difficult. But learning it by creating the data set, it becomes easy. Because you understand step by step. And even in the SDM IG, you don't need to learn the whole document. You just need to refer the certain pages where domains are there, their data sets are there, and some rules are mentioned over there. The actual thing, I think you should learn about SDM and Adam by creating SDM and Adam dataset. That is the actual way. There you will get much knowledge. Instead of reading the document, you'll do the implementation, and vice versa, you can refer the document as well. Krishna is asking, कृष्णा फिलहाल अभी तो नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले निकली थी, एंड अगेन अभी हॉल्ट होगा, फिर अगेन 1-2 महीने बाद वापस निकलेगी. Swapnil is asking, okay, thanks for replying. How to enroll for your course, sir? Will be there for your course.
Swapnil, there is an one-to-one counseling option. You can check in channel about section as well, in the video description as well. Through that, you can connect to me, and then we can discuss in detail. Hey Harshal, Vinayak is telling, sir, which job do you prefer from pharmacology? I'm pharma. See, Vinayak, there can be multiple jobs. See, what is the funda of job? Recently, I recorded one video. If you want to, like, see, there are two things in your life. That one thing is your educational background. Okay, another thing is your career. Okay, and you have some educational background and you want to grow in your life, so you want to make career in something where you get more pay, more stability and more growth. Okay, this is what you want from a job: more pay, stability and growth. Okay, so figure out which jobs are paying high. Okay, and you are eligible as per your educational background. So see, like, I cannot suggest you multiple job here because I didn't worked on them, and I don't have expertise on them. But I know one job, that is statistical programmer or clinical SAS programmer, because I have worked on that role and I have trained to multiple students, so I have that knowledge. So yeah, you can consider it clinical SAS as well, because the pay is high, the growth is high, and in clinical the stability is good. Ashika is telling, which is best, Python or clinical SAS? See, you cannot compare clinical SAS with anything. Python is a tool. Clinical SAS is SAS is also a tool, but you are having the clinical knowledge. Working on Python, working in any industry, you can face the recession or like economic slowdown. Okay, layoffs and this thing. Working on clinical SAS, on this role in clinical industry, the combination of data analysis plus clinical, here the stability is more good compared to any other industry. Okay, Anup has no vacancy in SAS as of now. Anup, you can connect to me, maybe I can help you. Aniket, sir, what is the salary of SAS programmer after 10 years? See, some of my students got selected with a package of 8 LPA, and those who got selected with the package of 3, I'm talking about fresher, I'm not talking about experience till now. So let's suppose, even in worst case, you got selected with a package of 3 LPA. Okay, after 2 years you can, or 3 years, you can easily cross 1 LPA per month. Okay, it means 12 LPA or 10 LPA you can cross after 2 to 3 years. After 5 years, you can cross 15 LPA. After 10 years, you can easily touch up to 35, 40, okay, or 30 LPA, like this. It depends upon company to company again. If you're working in small company, ultimately they are going to pay you low. If you're working in top MNCs, they have the budget, they are going to pay you high. So in clinical SAS, once you get entered into the industry, you don't need to worry about the money part, but you need to focus upon the work part, because the work you are doing, that is impactful. Okay, on the study you're working, that study is very crucial, that is going to impact the lives of many people. Okay, and money ultimately you'll be getting, either you are working in India, either you're working in US, either in Canada. Manjunath is selling, hi sir, I have 6 years of experience in order management in steel training. I learned power, then get job on that. On the basis of Power BI, getting job is not that much easy. What you can do, Manjunath, learn Python from internet, okay, like from YouTube for free, don't pay anyone. So the combination of Power BI and Python can help you to get job. Okay, only Power BI, it's like it may be difficult little, as per my knowledge. PC is telling, I have internships. If I have internship, do
I'll be experienced or fresher. You'll be counted as an experienced. Okay, you'll be not totally fresher. Okay, because you have some internship experience, so you'll be like more than the fresher. Okay, you'll be not exactly counted as a fresher. Rishikesh is telling, I'm working as a medical coder, but long-term growth is comparatively low than clinical science or CDM. Yeah, of course. Like, I'll tell you one story. Long back, 5 years back, when I was working in a company, so there was one guy 5 years back. He was working in CDM. He switched from CDM to SaaS. The reason was the growth and pay. So 5 years back, he switched. So if you are still working in medical coding, so ultimately someone who switched 5 years back, he already have done some research. Okay, already he worked for some years. Then he came to know, okay, the growth is more in the clinical SaaS role. So ultimately, yeah. So once you got to know, you should try switching. Ultimately, there will be a time you'll get the opportunity. There will be a right time. It depends upon your efforts as well. Rishikesh is, I think certification is needed to get in SaaS. Certification can help you up to 20%, not more than that, maybe 20. Because ultimately they are going to conduct interview and they are going to check your knowledge. Okay, so if you're able to perform well as a fresher itself, so they'll select you even if you don't have certification. But yeah, for getting interviews might be certification can help you, but still 20%. Rahul is asking which course is best in the situation, MM or PP. Rahul, as of now, I'll not suggest to do MM or PP. Explore more, because in SAP, a lot of people are learning SAP software. Okay, and their coding is not there in the functional module. So it is difficult because a lot of people are learning because coding is not there and salary is good. So the batch size is very high. Okay, the population is very high, the intake is getting lower and lower. Okay, compared to the supply they are getting, candidate who are learning SAP software. So what I'll suggest, open your mind and look around in the market. Cybersecurity is there, cloud is there, data analysis is there, CRM is there, and then you can consider ERP as well, that is SAP. Don't only just think about SAP. Rishikesh is telling base certification needed or advanced. Base certification is enough, okay, to get job in clinical science. No need of advanced certification. Bhavya is telling, sir, can you make video on base certification questions? Bhavya, I already made 2 or 3 videos on base certification. I have shared the entire roadmap. You can go and check. Even I made a playlist, okay, for clinical science. Vinith is telling, I have 8 years of career gap. I'm BTech mechanical 2016 passed. Give me suggestion. If you have 8 years of gap, okay, so you have nothing to lose, one thing for sure, but you have a lot to gain in life. Okay, so whatever you want to pursue, it can be cloud, data analysis, ERP or CRM. Okay, you need to first explore one thing, the experience you are having. Let's suppose 8 years of career gap you are telling, so you might be working somewhere, I am assuming. Okay, might be working on some role. Okay, so if you're working somewhere, is that experience is going to be beneficial in some related role which is in demand? If not, be open, look for data analysis, cloud, okay, ERP, CRM, and see like what you are getting interested into, okay, which is like you're feeling this is convenient to me, I can learn it, perform well. Just talk to working professional, even you can talk to me as well, maybe I can guide you.
Bhushan is telling, hello sir, thank you always for your guidance always. Actually, I have taken coaching as clinical. I need guidance in remote control studio. Yeah, Bhushan, you can connect me through one-to-one counseling session. Maybe I can help you. Aniket, sir, when you say 3 LPA and 15 LPA, is this in hand or CTC? I'm talking about CTC. In hand can vary because companies have a lot of components, but you don't need to worry, right? After 2 or 3 years, or let's suppose after 2 years, once you start getting 1 LPA, you don't bother how much money is getting credited into your account. The time you bother your salary is once your salary per month is 30,000, 40,000. But once your salary go beyond 1 lakh, you don't bother much. Okay. So after 3 years, your salary can easily reach up to 1 LPA or you can cross 1 LPA per month. How much should we pay for clinical SAS training? See, it's totally depend upon you. Okay, there are institute who are charging from 30K to 2.5 lakh. I believe under 1 lakh, there are enough institute where you can get good training and good projects as well and everything else. Okay, and I believe 80K should be the max fees. No one should pay beyond 80K. Okay, it's totally upon you. See, it's totally upon you, like what is your budget. Okay, one can have a budget even of 2.5 lakh, but what I believe, there is nothing unique in the 2.5 lakh. You can, in the market within the range of 80K, you will get a lot of institute with good training and good modules, everything. Even you can consider to us as well for training, for me as well. And again, if your budget is something like 30K, 40K, you can just try connecting to those institute. Okay, but make sure you are getting the good training, good guidance and good support. Bharat is telling, sir, please reply me back. I'm Bharat. Talk 2 days before. Okay, Bharat, like, have you called me or like pinged me anywhere? Shah is asking, sir, how much cost for training of SAS program? Shah, for that you can connect to me. If you're asking to me how much my fees is. Manjunath, you are a positive person. I talked to you exactly 1 year ago when I was jobless for 2.5 years because of mother cancer issue. Now I am good job. Thank you for boosting my confidence. Manjunath, first of all, thank you for giving me the opportunity to help you. Okay, it is not something I believe I helped you. It is something you have chosen me, that this guy can help me, and you have given me that opportunity, and hence I have proved that I can help you. So I don't know how did I directly help you, but I'm glad to know that indirectly I helped you, and thank you so much. Aniket, sir, please take interview of your student whom you have interviewed earlier so that we can get to know views. Yeah, Aniket, even I have planned. अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1-2 साल, like a lot of my students, they are working from more than 1 year. So I'm planning to take their interview to share their experience, like what is their experience after 1 year working on this role. So in the coming videos will be on that only. See, I have, like, my universe, I have told this thing earlier as well. What I believe, testing is not that much good. If you want to spend time and money, spend on like app development, cloud, data analysis, cyber security. Okay, a lot of things are there. I think testing is not for long run. Even don't consider it for short run as well, because the crowd is too high. A lot of institute, if someone is coming from non-technical background, they are selling the course of testing. They are telling that easily you can get a job.
they are even telling programming is less as well. By telling these things and you can easily get a job, they are just catching a lot of students that learn testing. Okay, and especially institutes are in Bangalore. Okay. So guys, I cannot see any questions. Okay, my screen got stuck or what? Abhishek is asking, please take interview for a student who didn't go for global certification given interview or coming. Abhishek, 99% of my students, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 99% ऑफ देम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक ही स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुआ वो बेस सर्टिफाइड था ग्लोबल, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट सर्टिफाइड नहीं थे, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट सपोर्टिंग ग्लोबल SaaS सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन इज गुड, बट that is going to help you 20%. Don't be dependent upon certification, that if you do certification, it will help you to like crack any interview or get any interview. Ultimately, it depends upon your efforts. Okay, how much effort you are putting for getting interview and cracking interview and learning as well. So yeah, certification is good, but let me give you this example. If suppose 100 of our students got selected, 90 of them are like non-certified. And let me, like, straight away, if I have to tell, only single, like one student, one of my student was BSS certified, he got selected, and all our other was, they didn't apply for BSS exam, they haven't given. Why? Because ultimately I told them, you don't need to initially spend much more money if you don't have. Okay, just learn the software, get the knowledge, apply for jobs. If you're not getting job, if you're not getting interview, then you should go for certification. Okay, and then you should again find job. So yeah, certification can help you, but again, it is not like that is standard something that after certification you will get a job. Ultimately, it comes around to your effort, how much effort you are putting into. Like government exam, there are very high competition in private also. Aniket, that is correct, but still government job is very slow, like their process is very slow. In private job, if you're learning coding or any technical things, like your knowledge is something beyond. In government job, I don't believe even if you got a job, what's your knowledge will be. Maybe you get money and stability, but your knowledge is still here. Believe me, I think 90% of government jobs, there is a cap in your knowledge. Technically you don't grow, you get the stability and job, but at least in private job you grow rapidly technically. You know, all the government sectors are in loss only. Why? People love government job, but people don't love government services. So the economy is driven by private jobs. Why US is so powerful? It is not because their government is powerful. It is because all the big companies are having their headquarters in US only. They have like more product than any other country, like Google, Microsoft, Amazon, Tesla. Many products they are having. Travel Buddy is telling, I have joined company as a trainee engineer, intern 1.3, got full time. They have mentioned trainee engineer experience letter. Whether next company consider as experience? Yeah, it will be considered as an experience. Don't worry. Krishna says, enter questions. Sure, Krishna. प्रोपेगेंडा सर PL 300 सर्टिफिकेशन के बारे में बताओ. सॉरी प्रोपेगेंडा बस्टर, ये PL 300 सर्टिफिकेशन के ऊपर तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता. लेट मी हैव इट. इट इज़ रिलेटेड टू SaaS और व्हाट? ओके, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पावर BI, राइट? ये पावर BI के रिलेटेड है. सी, कोई भी सर्टिफिकेशन पे पैसा लगाने से पहले मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि अपने नॉलेज अच्छे से ले लो.
get the knowledge in a good way, work on some project or create some project, get the knowledge of project, try to get interviews. Okay, don't directly jump to certifications. Preeti, sir, I have worked for 3 years in manufacturing as a purchase engineer, passed from 7 months working in pharmaceutical company as a purchase executive. So further, should I join SAS or SAP MM Total? Preeti, just connect to me through one-to-one counseling. There we can discuss in detail, okay? Because your case is interesting, so I can suggest more. But I don't think like here in one-way communication, I can answer you all the things. Omkar, Python and SAS become data analysis. Python and SAS to become data analyst. Omkar, see, to become a data analyst, you don't need to learn Python and SAS. Even if you learn Python, even if you learn single SAS, you can become data analyst. Okay, but if you want to become a data analyst in clinical, then you should know SAS. Okay, so it depends upon the role, industry where you want to work. Anywhere, if you're doing data analysis, either on SAS, either on R, either on Python, you can tell yourself data analyst. Samiksha, joining CDM will be a wise decision. I have already selected for 2 rounds. Only result is awaiting. And that company SAS is also there. Please guide me. Samiksha, go for it. If you're getting opportunity as in CDM as well, go for it. Abhishek, actually sir, global certification is too much expensive. Doing after training is too hectic. That's why I have started applying without job global cert. That's great, Abhishek. Bhushan, are there an internship in field of clinical SAS? In clinical, mostly if the company is hiring you for internship, 99% of chances are there that they are going to hire you after the training or after the internship. Propaganda बस्ट बोल रहा है यस सर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटा एनालिसिस है. ओके, अगेन मैं यही बोलूँगा, देखो सर्टिफिकेशन तो बहुत सारी कंपनियों ने सर्टिफिकेशन का एक बिजनेस कर दिया है, दैट विल हेल्प यू. ठीक है, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि आप नॉलेज दो, उस नॉलेज को शोकेस करो. कंपनियां नॉलेज चाहती है, ना कि सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन हेल्प करता है बट 20% 10%. अभिषेक, अपने नॉलेज को बोलने दो. लाइक दिस इज फॉर प्रोपेगेंडा बस्टर. आपने अगर नॉलेज एक्वायर किया, उसको लिंक्डइन पे शेयर करो. आपने क्या किया है, आपने क्लिनिकल में कुछ सीखा है, आपने साइंस बेस में कुछ सीखा है. सॉरी, आपने पावर बीआई में कुछ सीखा है, तो उसको शोकेस करो. आपने क्या बनाया है बताओ. ओके, वो ज़्यादा आवाज़ करेगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ सर्टिफिकेशन. ओके. प्रीति, how can I have one-to-one counseling with you? Preeti, in this video description itself, you can find there is an option one-to-one counseling, or you can even found in the channel about section one-to-one counseling option. From there, you can connect to me. Bhushan is asking, does companies recruit the final year student? As I'm final year, eyeing towards applying process for interview. They recruit, Bhushan, but mostly your joining date will be after completion of your study, once you get your final results. Okay. By the way guys, आप सभी का संडे कैसा था? सो टुडे वाज संडे. हैव यू एंजॉयड, और बस ये जॉब एंड करियर के डिलेमा में ही गया? आई होप लाइक सभी अपने टाइम पे एंजॉय करते हैं, बिकॉज जब आप मुझसे कनेक्ट करते हो तो आप ये बिलीव करते हो कि आप अपने करियर के बारे में या कुछ मुझसे गाइडेंस लो. इसके लिए आपके क्वेश्चंस उसी रिलेटेड होते हैं. अभिषेक बोले, सर आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो क्या जॉब के रिलेटेड? अभिषेक फिलहाल तो नहीं करते, बट सोच रहे हैं ग्रुप क्रिएट किया जाए. ठीक है, या तो मैं लिंक्डइन पे भी जॉब्स के रिलेटेड शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा. ओके, ये आपने मतलब जो क्वेश्चन किया है, ये मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ.
या तो एक ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ जहाँ मैं जॉब पोस्ट करूँगा, या तो लिंक्डइन पे भी मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, फिलहाल नहीं करता। स्वप्निल, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई कैन सी ओनली क्वेश्चन मार्क। Samiksha, if I'll join CDM, can I switch to SaaS again? Yes, Samiksha. You don't need to be fresher again, okay? आपको फ्रेशर नहीं रहना पड़ेगा। और सीडीएम और सैस में मतलब सैलरी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर सीडीएम डिपार्टमेंट में आप सैस पे काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भी सैलरी ट्रिमेंडस होती है, अच्छी होती है, ओके? ऐसा नहीं कि बहुत लो होती है। अभिषेक श्योर। अनिकेत बोले सर लिंक्डइन ओपन करते डिप्रेशन होने लगता है। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना आप सभी। सो लेट मी टेल वन थिंग गाइज, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, there is someone who created a company, and there is one person like us who are looking for a single job. So if a person can create a company, why can't we can get a good job for us? Okay, so just trust upon yourself. Okay, don't like simply follow the LinkedIn. Okay, if the things are going negative, people are not getting it, people are looking for jobs, so what will happen to me? Don't compare yourself with anyone else in the market. What happened, the problem is, by opening any application, by opening LinkedIn, we start comparing ourselves. This guy is looking for a job, so what will happen to me? This guy is not getting job, what will happen to me? Someone is like writing something, so what will happen to me? Not every problem is your problem. Okay, see, if you don't trust yourself, if you are not confident upon yourself, how come someone else can be confident upon you? How he can trust upon you? So see, once you are in your career stage na, so the situation becomes very difficult, because there is no one to help you, no one to guide you, no one is there to trust upon you. You are like a failure stage of your life. So at that stage, you need to give confidence to yourself. You need to trust upon yourself. You need to work upon the things where you are lacking. And believe me, guys, your struggle for maybe 6 months or 1 year, that will be paid off. And that will be paid off in a very good way. So don't worry about the struggles you are doing in life for your career. Okay? If you're not doing something bad in life, so you're doing something good in life ultimately. And if you're doing something good in life, you're gonna get the result. But the problem is we don't have patience when we're gonna get the result. Okay, so that gonna take time. So don't sit idly. That's why I always tell, look for some job, get a job, let's your career roll on. Okay, and soon you'll get the opportunity, soon the things will change. Okay, 4 or 5 years back, I was in the same situation. Maybe in the situation you guys are, like what to do in life. So yeah, I got some guidance from here and there, but ultimately what I found, that I have to struggle. But whatever struggles I did on like figuring out what to do in life, or like to get a job, all the things got paid off. But it took a lot of time. Okay, and so yeah, it takes time. You need to trust upon yourself once no one is there for you. So this is the time only, like you need to like face off everyone, right? You need to prove yourself. Propagandist links. I'm currently data analyst to an educational institute. मैं बट काम एक्सेल शीट एक्सेल में ही कराते हैं सर, मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा प्रोपेगेंडा बस्टर, डोंट वरी। इवन आपने एक्सेल में भी काम किया ना डेटा एनालिसिस के लिए, तो वो भी एक्सपीरियंस काउंट होगा, डोंट वरी। काम होता है, ठीक है। नॉलेज ये नहीं होता सिर्फ कि आपने किस टूल पे काम किया है, नॉलेज होता है कि आपने क्या किया है, कैसे काम किया है, क्या फ्लो था।
Swapnil is telling most of the vacancies as require experience. Many scientific experience is the very way to get jobs in situation. Swapnil, I already made a video on this. Why every clinical science job require or every IT job require 1 or 2 years of experience. Actually, this is myth. There are jobs for fresher, but yeah, you need to understand the cycle. Once the vacancy is there in the market, again it will take 2-3 months. Then again vacancies will be there. Again it will take 2-3 months, and again vacancies will be there. शीतल गुजरा सैप का पे स्केल कैसा होता है? शीतल, सैप का पे स्केल अच्छा होता है, बट इसमें अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ ध्यान में रखना. स्वप्निल पूछ रहे हैं हाउ मच पे आफ्टर 10 years CDM. स्वप्निल, CDM में भी पे बहुत अच्छा होगा. मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको पैसे का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कभी भी. विल नॉट फील कि मुझे किसी से कंपैरिजन में कम सैलरी मिल रही है. अच्छा खासा पैसा मिलता है. CDM से थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर को, जिसको हम क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर भी बोलते हैं ग्लोबली. ऑलरेडी जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर है, CDM है, ये सारे वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है CROs में. Kioma Sports, good evening sir, I have 12-year experience into PSB Bank. Now want to learn only clinical science. I succeed if I start now. What application? Kioma, if you have 12 years of experience in clinic, like PSU Bank, then you should learn SAS and work in RBI or like Deloitte, KPMG or audit firms. SAS is also being used in banks, audit firms, even I think in RBI as well, IDBI Bank as well. Many banks are using SBI as well, Axis, Kotak. So first you can start your journey like this, because if you have 12 years of experience, you should utilize that, right? And even if you want to switch to clinical SAS, yeah, you can, but the journey will, like for getting job in bank, can be a much easier for you, as you're having 12 years of experience, right, into a PSU bank. But if you still want to move in like only clinical SAS, for that you can connect to me. We can have a detailed discussion over that. Nikhil, I have done MSc in life science and to go for clinical trials. Into clinical, what should I do? Should I go for data analysis or clinical trials? You want to go for clinical trials. What is the role? What is the specific role you are talking about, Nikhil? And you are telling for data analysis. Data analysis is a common term. Data analysis can be anywhere in any domain. But in clinical, there are some specific roles. CDM, statistical programmer, okay? So on that role, you need to learn this software, you need to analyze the data, and you need to create certain things like SDM Adam table listing. So data analyst is a common term. You need to understand that you can compare like statistical programmer or clinical trial. If you're telling clinical trials, but what is the role? Which role you are specifying? Because both the term you are using, na, that is a common term. निखिल, अभिषेक बोले फ्रेशर को फर्स्ट राउंड से लेकर सिलेक्शन तक कितना टाइम लगता है? देखो, कंपनी के ऊपर होता है. कभी कभार कंपनी में एक ही राउंड होता है, आपको 20-30 मिनट्स का इंटरव्यू लिया जाता है और सब कुछ उसी राउंड में हो जाता है. एंड इन सम केसेस दे माइट हैव 3 राउंड्स. फर्स्ट राउंड विल बी स्क्रीनिंग, दे विल बी आस्किंग सम बेसिक क्वेश्चन, दैट्स ऑल. सेकंड राउंड विल बी टेक्निकल, okay. It will be a depth, okay. They'll be asking the question in very depth. Third round will be the HR round. If you cross the technical round, it means you got selected. If it is a little big company, so they will take 2 or 3 rounds. If it is a small company, they'll take 1 round and they'll select you if they want to. MS Ram बोले, I have worked in pharmaceutical industry for 3 years now. I want to show to the industry. MS Ram, you will not exactly start getting calls after training. You need to first understand how to apply for jobs. You need to get the knowledge. You need to get the proper knowledge. Yes, you are eligible to get the job as a clinical science programmer, but there is some process and you need to follow that. Then only you will get the call and job.
प्रोपेगेंडा बस्टर बोले सर आपके हिसाब से मॉर्निंग शिफ्ट अच्छा होता है या आफ्टरनून शिफ्ट? मेरा शिफ्ट टाइमिंग कॉमन टाइम था, लाइक मुझे ऐसा कुछ शिफ्ट नहीं था हमारी कंपनी में। जिस कंपनी में मैं था आज से आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, तो लाइक इट वाज 9:30 टू 6:30 समथिंग, ऐसा कुछ टाइमिंग था। ठीक है, तो वो कॉमन टाइम था। अराउंड 9:30 या 10 को सभी लॉग इन करते थे और काम के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से लॉग ऑफ कर लेते थे। रवि बुरा बोले सर फेक रवि बुरा SAP FICO consultant for fresher available. You are asking about job or what, like Ravi? Vishal is telling I'm trying to reach you, but Vishal, there is an option one-to-one counseling. Just check in channel about section on or in the video description. You can connect to me. Nikhil, what to do? Nikhil, you can connect to me. Again, in channel about section video description, there is an option one-to-one counseling. Through that, you can connect to me and we can discuss. अभिषेक फ्रेशर लेवल के लिए टेक्निकल राउंड में कितनी डिफिकल्टी लेवल होती है? सी मेरा क्या मानना है, डिफिकल्टी लेवल एकदम स्मूथ हो जाता है। कोई भी इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं होता, कोई भी इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं होता। द ओनली थिंग इज आपको बस इंटरव्यू अटेंड करना है, एटलीस्ट दो तीन इंटरव्यू अटेंड करने के बाद आपको सब पता चल जाता है, सारे डाउट चले जाते हैं। इंटरव्यूज ईजी होते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया वैसी की वैसी ही थी, हम इम्प्रूव हो रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी आर गेटिंग बेटर, things are same, nothing is difficult, because we don't know, we don't have that much knowledge, so it becomes difficult for us. But once you start putting your efforts now, you get improved day by day and you crack it, the things become easy for you. Okay, so things are like as it is from years and years. It is not like difficult or easy. Gaurav बोल रहे, hi sir, I have got shortlisted for statistical programmer 1 at Seniors Health and phone and video interview completed. Next is test. Can you tell me topics to focus to clear the test? You got shortlisted at Seniors. The test is like a written test, or it's like they'll give you some scenarios to solve. Is they have told you what will be there? There will be journal questions or related to SAS. There will be some questions like already written question, you to answer them. How it will be? Accordingly, I can guide you, Gaurav. Is they have guided anything like this? Vicky selling, hello sir, I'm currently working as a medical representative in a pharmaceutical company. Vicky, you can connect to me through one-to-one counseling session. You can find the link in video description and about section. We can discuss in detail. विशाल बोले सर मैंने आपसे कल पे बात करी थी, उसके बाद आपका रिप्लाई नहीं आया, बहुत बार कॉल किया आपको। आई रियली वांट टू लर्न फ्रॉम सर। विशाल मुझे अभी एक मैसेज करो, आपके पास अगर सॉरी अगर आपके पास मेरा नंबर है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर आई एम विशाल और मैंने ही आपको अभी लाइव में पिंग किया था। ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। कभी कभार क्या होता है विशाल, लास्ट वीक से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, काफ़ी सारे मैसेजेस और काफ़ी कुछ पेंडिंग था, और क्योंकि मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उनमें मेरा दिन निकल जाता है, और काउंसलिंग के कुछ कॉल्स लेता हूँ, तो जब मैं किसी के भी कॉल लेता हूँ तो मैं अच्छा खासा टाइम देता हूँ, एक बंदे को 1 घंटा टाइम देता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैंने 3-4 कॉल ले लिए तो दिन के 4 घंटे उसमें चले गए, प्लस मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ बाकी का टाइम उसमें चला गया, तो टाइम नहीं बचता। कभी बार ऐसा होता है। HR told you it will be only SAS, it's a written test. So most probably you can focus upon the logics, Gaurav. Logic means you can just solve some questions from internet. Okay, and just solve some questions, develop your logic, because you don't know what type of question they can ask you.
but most probably it will be from base or advanced SAS, we can assume, right? On the basis of base mostly and advanced SAS. So just revise your topics, just solve some questions from internet, that's all. Don't worry much, just give the test and that's all. Okay, so I hope I have taken most of your questions. So guys, ये जो मैं लाइव सेशंस अभी कर रहा हूँ ये मैं रेगुलरली नहीं कर पा रहा, ठीक है? थोड़ा सा लेजीनेस भी बोल सकते हो और थोड़ा सा काम भी बोल सकते हो, ठीक है? काम की वजह से भी और थोड़ा लेजीनेस की वजह से भी. But what do you think? Is this live discussion like is helpful? If helpful, when I should do? On every Sunday or on every Saturday, Sunday? If on every Sunday, what should be the time? Is 10 p.m. is a good time or 9 p.m. is a good time? Should I do only on Sundays or Saturday, Sundays? Just tell me in the comments. Accordingly, I can plan. विजय बोल रहा है आई एम लर्निंग सैस फ्रॉम 1 year बट अनेबल टू रिमेंबर. आपका क्वेश्चन तो इसके ऊपर तो वीडियो बननी चाहिए. विजय आपके क्वेश्चन पे पूरी वीडियो बनेगी अभी, ठीक है? शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आप सैस को सीख रहे हो और 1 year हो गए फिर भी नहीं सीख पा रहे, तो सबसे पहली बात बोलूँ, शायद आप सही तरीके से सीख ही नहीं रहे. आपको पता ही नहीं है उसको पढ़ना कैसे है, या जो उसने आपको पढ़ाया है उसने आपको बताया नहीं कि कैसे पढ़ना है, या तो आप फॉलो नहीं कर रहे, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है? ये कुछ कॉमन सिनारियोज है. टिप्स मैं यही दूंगा. देखो, अभी मुझे नहीं पता आप कौन से स्टेज पे हो, आप एक रोड मैप बनाओ कि आज मैं सारे फंक्शंस वो करूँगा, रिवाइज करूँगा, कैरेक्टर फंक्शंस, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम फंक्शंस, और फिर रिवाइज करने के बाद सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लो. ऐसा रोड मैप बनाओ डेली की आज के दिन में इस दिन में इतने टॉपिक कर दूंगा, और इस हिसाब से मैं 20 दिन में सारे टॉपिक रिवाइज कर लूँगा या 30 दिन में सारे टॉपिक रिवाइज कर लूँगा. 30 दिन बाद आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू एक सेशन अरेंज करो, ठीक है? स्लॉट बुक करो, फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा आप कहाँ लैग कर रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है? मे बी दैट कैन हेल्प यू. गौरव बोल रहे हैं संडे इवनिंग विल बी अ गुड टाइम फॉर लव सेशंस. फॉर लव सेशंस ये चीज़ समझ में नहीं आई. लव सेशंस कौन से सेशंस होते हैं मेरे भाई? और एग्जैक्टली गौरव मुझे टाइम भी, अच्छा लाइव सेशंस, तो टाइम क्या होना चाहिए इसका? 10 PM, 9 PM, what is the best time according to you? नाना बोले सर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज यू आर रोल मॉडल फॉर यूथ. नाना, हेल्थ का टेक केयर करना आपने सही बोला. ये मेरी जो हेल्थ ख़राब हुई, मैं संडे को बाहर चला गया था, कहीं घूमने चला गया था लास्ट संडे को, इस संडे की बात नहीं है, ये जानते हुए भी कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है. उस दिन मुझे पहले ही फील हो रहा था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, फिर भी मैं चला गया और बारिश में अच्छा खासा भीगा. उसके बाद मेरी सिचुएशन ख़राब हो गई. तो ये बात सही है नाना ने बोली कि क्योंकि मैंने देखा कि जब अगले मैंने 2 या 3 दिन मैंने सेशन नहीं रखे कोई भी, क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ, राइट? क्लास लेता हूँ, फिर कुछ मीटिंग्स होती हैं, सारा काम पेंडिंग चला गया. मुझे 3 दिन सेशंस कैंसिल करने पड़े क्योंकि मेरी आवाज़, बात ये नहीं थी कि मैं बैठ भी नहीं सकता था, सेशन भी नहीं ले सकता था बैठ के लाइव, मतलब मीटिंग्स. बात ये थी कि मेरी आवाज़ पूरी डाउन हो गई थी, मेरी आवाज़ ही अलग हो गई थी. और मेरा पूरा काम समझो बात ही करने का होता है, कम्युनिकेशन का ही होता है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं गाइड कर रहा हूँ, चाहे मैं ये लाइव कर रहा हूँ. तो वो 3 दिन मुझे सब कैंसिल करना पड़ा, और वो मुझे लगा कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए.
तो मैंने वही चीज़ ध्यान दिया कि कभी भी हेल्थ में आपको भी ऐसा करना चाहिए, मुझे ही नहीं, कभी भी हेल्थ में आपको लो फील हो तो आप इग्नोर करो कहीं बाहर जाना बेवजह। ओके, बिना वजह के बिना काम के आप बाहर मत निकलो अगर आपकी हेल्थ आपको अच्छी नहीं फील हो रही है तो। सो या अरिंदम बोल रहे हैं, हाय सर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट अरिंदम। विजय बोल रहा है कि 7 PM। अभिषेक बोल रहे 10 PM। सौरभ बोले सॉरी सर, टाइपिंग मिस्टेक, 10 PM विल बी गुड। ओके 10 PM। दीपेश बोले सर व्हाट इज फ्री ऑफ कोर्स? दीपेश आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोर्स के बारे में बता दूंगा। देखो मेरा क्या मानना है गाइस, आप में से बहुत लोग हैं ना सीधा कोर्स की फीस पूछते हैं, कॉल भी आता है तो कोर्स की फीस पूछते हैं। तो मेरा क्या मानना है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हो, जिससे सीखना चाह रहे हो, वो आपको सही ज्ञान दे सकता भी है कि नहीं। उससे आप टेक्निकली चीज़ें पूछो कि कितने महीने की ट्रेनिंग होगी, क्या क्या पढ़ाओगे, मुझे नॉलेज नहीं है, क्या आप मुझे पढ़ा पाओगे कि नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे, क्या मुझे गाइड करोगे, मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी मुझे कोई डाउट होता है क्या आप मुझे हेल्प करोगे कि नहीं, ये सारे सवाल पूछो। फिर बात आती है कि हाँ ये बंदा मुझे नॉलेज देगा। आपने ये वेरीफाई किया ही नहीं कि ये बंदा मुझे नॉलेज दे पाएगा कि नहीं, ये मेरे मेरे जो क्राइटेरिया उसमें फिट हो रहा है कि नहीं। फिर बात आती है कि मेरा फाइनेंशियल का क्राइटेरिया है, अब मैं इससे पूछूं फीस कितनी है, तो फीस हमेशा लास्ट में पूछो, पहले परखो तो सही कि जहाँ से आपको नॉलेज लेना है वो मिलेगा कि नहीं, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, गाइडेंस मिलेगा कि नहीं। फिर बात आती है फीस की। क्या, तो कभी भी किसी से डायरेक्टली फीस नहीं, पहले सारी चीज़ें जानो कि जो चीज़ आप कंज्यूम नॉलेज लेना चाहते हो वो मिलेगी कि नहीं। नयन सर, जॉब क्लिनिकल सर बैकडोर जॉब्स आर प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर्स। नयन बोल रहे हैं कि क्लिनिकल साइंस फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है, बैकडोर जॉब मिल रही है सिर्फ ब्रोकर के थ्रू। नयन, ये कमेंट में ही समीक्षा करके एक स्टूडेंट है, उनको मैंने काउंसलिंग दी थी, ठीक है, उन्होंने आई थिंक उन्होंने अभी बोला कि उन्होंने शायद 2 या 3 इंटरव्यू दिए, जाके बैक रिवर्स करके कमेंट पढ़ो, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने जब उन्हें काउंसलिंग दी थी उस वक्त तक उनके पास इंटरव्यूज़ नहीं थे, उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ इंटरव्यूज़ मिले हैं, ठीक है। अभी एक इंटरव्यू में उनका ऑलमोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे, उन्होंने बताया अभी कि CDM के रोल के लिए है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है नयन कि जॉब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्रोकर्स के थ्रू ही आ रहा है। हाँ मैं मानता हूँ ब्रोकर्स ने बुक कर रखी है 30% जॉब्स, बट मार्केट में जॉब्स है। बट वही मैं बार बार यही बोलता हूँ कि खाली बैठ के जॉब मत ढूंढो। ऐसा नहीं कि आप जॉब के वजह से ये जॉब मिलेगी तो ज़िंदगी में तभी मैं जॉब करूँगा। यू शुड डू समथिंग, मतलब जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके रिलेटेड कोई ना कोई काम आपको करना चाहिए। यू शुड नॉट सिट आइडल, व्हाट आई मीन टू से। आरिदम बोल रहे हैं सर, हाई कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन लिस्ट ऑफ कंपनीज एंट्री लेवल क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर। ठीक है आरिदम, इस पे बनाया जा सकता है, ठीक है, इसको भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। प्रवीण बोल रहे हैं कि सर अभी एटोस ऐप कोर्स करना वर्थ है। देखो एटोस का ये जो कोर्स है ना प्रवीण, देखो एटोस SAP सिखाने का 3.90 लाख ले रही है, ये टोटली लूटने का धंधा है। अब मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल किया था, ठीक है, मैं काउंसलिंग देता हूँ, तो उन्होंने बताया कि सर मैंने एटोस में कोर्स किया है बट वहाँ से मुझे कुछ जॉब का ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, उनकी फ़ीस भी हाई है, ऊपर से उन्होंने फ़ीस भी समझो अभी 3.90 बोल रहे हैं ना, पहले उनका इतना हाई नहीं था, 2 पॉइंट समथिंग कुछ ले रहे थे, अभी उन्होंने 3.90 कर दिया। तो ऐसा कुछ वर्थ नहीं है, 3.90 देने से कुछ नहीं होने वाला, मैं सही बोल रहा हूँ। मैक्सिमम 70,000 80,000 या 1 लाख बहुत हो गया, मतलब बहुत, सब कुछ प्रोजेक्ट सब कुछ मिल रहा है ना, सर्टिफिकेशन उन्होंने इंक्लूड किया तो भी 1 लाख बहुत हो गया। 3.90 तो मैं बोलता हूँ पैसे वेस्ट, ठीक है, इतना कभी भी देने की ज़रूरत ही नहीं है।
टिपिकली मैंने एटोस के स्टूडेंट से बात की है, मैं क्लेम कर सकता हूँ, वहाँ के स्टूडेंट से मैंने बात की है जो उसने वहाँ से पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने उन्हें कुछ चीज़ें गाइड की, मैंने बताया कि कभी भी इंस्टीट्यूट पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं रहते, क्योंकि अगर उसने बोला है कि आपको प्लेसमेंट देंगे, सब कुछ देंगे, तो वो तो सबको ही बोल रहा है ना जो उसके पास जा रहा है। If that company is claiming we are providing placement, it means they are claiming this for every student that is coming to them. But can they give job to all the students that is coming to them for training? No, right? How can they claim like this? No one can claim, even I cannot claim. So that is wrong, and the fees is like totally, it's like looting, I can tell in the camera itself. 3.90 lakh, what's that? You can get everything in like below 1 lakh or in max in 1 lakh. तो वहाँ से मत करो, ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करो, टाइम दो, मिल ही जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोर करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, so guys, 19 people are watching this live session, but I can see only 11 likes are there. Why this biasness is there? लाइक करने का कितना चार्ज लगता है आपको? तो फटाफट करो अभी। एंड ओके, आई थिंक अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं आपके, तो कुछ ही देर में अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आते तो हम ये लाइव सेशंस एंड करेंगे। सो अनिकेत ने क्वेश्चन पूछा है, सर फिर कोई और इंस्टीट्यूट जो 1 लाख तक की फीस में अच्छी जॉब प्लेसमेंट गारंटी दे सकता है, एनी सजेशंस? प्रवीण, ऐसे तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, ठीक है, कि ये इंस्टीट्यूट अच्छी है यहाँ से कर लो, बट हाँ आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू। मैं शायद कुछ बात करके देखूँ जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्शन में, जिन्होंने पढ़ा है, तो मे बी उनसे बात करके शायद मैं आपको कुछ सजेस्ट कर पाऊँ, ठीक है। नैने सेलिंग सर सीडीएम के रिलेटेड है क्लिनिकल साइंस से, समीक्षा तो सीडीएम के बारे में बात। सर सीडीएम कैसे रिलेटेड है क्लिनिकल साइंस? भाई सीडीएम और क्लिनिकल साइंस ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको पता है नयन। सीडीएम का ही डेटा क्लिनिकल साइंस के पास आता है, यू नो। वो जो डेटा को आप स्टैंडर्डाइज करते हो, तो सीडीएम वाला जो बंदा सैस पे जो काम कर रहा है ना, सीडीएम वाला जो बंदा सैस पे काम कर रहा है, उसको 70% नॉलेज है क्लिनिकल सैस के रोल का। आपको ये चीज़ पता है? उसको 70% नॉलेज है। आप जो डेटा पे काम करने वाले हो, वो डेटा सीडीएम टीम ने ही फाइनलाइज किया है। कैसे बोल सकते हो कि वो रिलेटेड है ही नहीं? आपका जो टीम है ना, जो आपका डायरेक्ट आपके पहले का डिपार्टमेंट है, वो सीडीएम ही है। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के पास जो डेटा आता है वो सीडीएम से ही आता है। दोनों हैंड ऑन हैंड चलते हैं, सीडीएम और स्टैटिस्टिकल। Movies now. Why SAS programmer is not famous on YouTube like other programmer job, including interview and people? Okay. See, कल से मैं अगर 2-4 मूवीज नाउ मैं बनाना शुरू कर दूँ वीडियो, तो फेमस हो जाएगा, बट मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर्फ पैसे की बात करूँ, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है बाकी रोल पे जो इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्लेम करता हूँ कि ये छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बुरी है, ओके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हाँ अगर आपको ये चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है कि SAS प्रोग्रामर और क्लिनिकल SAS स्पेशली स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, इफ यू टॉक व्हाट इज द ग्रोथ, सैलरी, डिमांड, स्टेबिलिटी, ट्रिमेंडस, ठीक है। मैंने खुद उन चीज़ों को फेस किया क्योंकि मैं इस रोल पे काम कर चुका हूँ। मैंने उस चीज़ों को महसूस भी किया है, देखा भी है और मिला भी है मुझे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सारी चीज़ें ट्रिमेंडस है, पे भी ट्रिमेंडस है। फेमस क्यों नहीं? आप बोलो, मैं कल के कल फेमस कर देता हूँ, बट वो करना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है।
Seema Afseen. Hey sir, what do you suggest for career gap pharma students? See, Seema, career gap is not a big deal. Either it's for girl or boy. That doesn't mean, okay. Ultimately, you should able to convey to the interviewer what was the specific reason for career gap, okay. And then you can tell like now you want to continue your journey and you have gathered the skills after career gap for whatever role you're going to work, okay, or you have choose some xyz role, you want to work on that. So get some knowledge on that, gather some knowledge, then give the interview. You can tell to them like due to xyz z reasons I was unable to work, but then I felt like okay, I should continue my journey, career journey. Then I gathered the required information for this specific role, and as of now I'm giving the interview and I want to continue my career, okay. They cannot tell you ki why you have career gap, you cannot work now. No one can tell, okay. So don't worry. सुशांत पूछ रहे सैप एमएम का स्कोप है? आज के टाइम में मुझसे पूछोगे तो स्कोप तो है बट कंपटीशन SAP MM में बहुत ज़्यादा है. द रीज़न इज़ नॉन टेक, मतलब जो उसमें फंक्शनल जो मॉड्यूल होता है ना, उसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती. तो बहुत सारे लोगों ने उसको सीख लिया ये सोच के कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सीख लेते हैं, अच्छी सैलरी है, खास करके मैकेनिकल इंजीनियर्स में. तो वो एक प्रॉब्लम है. थैंक यू सीमा. So guys, we'll do this live discussion on every Sunday 10 p.m. okay, 10 to 11. I'll make sure every Sunday I'll be available for live discussion and I'll be taking your questions one by one. Aridam बोल रहे हैं, hi sir, I'm from pharma working on service based company on banking domain. Yes, can I do clinical field? Yes, Aridam, you can. You can connect to me through one-to-one counseling option. We can have a discussion over that. So guys, see, I'll tell you one thing. Once I do a career counseling, any questions I answer related to their career, easily the time goes for 1 hour, you know. So sometimes I feel if something is related to your career, how can I answer in just 1 minute? Let's suppose if you have choose something, if you want to decide something for your career, how can I answer you here in 1 minute or just by thinking one thing? That needs like continuous communication. I'll be asking certain questions, you'll be answering me. Accordingly, we'll be coming to a conclusion. Our talks will be coming to conclusion. And that is what career counseling or guiding or helping. Okay. So guys, that's all for now. I think I have taken almost all of the questions now, okay, and I hope we'll meet soon in the next live session on next Sunday. तब तक के लिए bye bye everyone and good night everyone. मिलते हैं अगले संडे को. तब तक हेल्दी रहना, खुश रहना and bye bye. So you can see the live setup as well. कैसे मैं लाइव कर रहा हूँ. तो देखो, मैं फ़ोन के कैमरे से ये लाइव कर रहा हूँ एंड ये रहा कंप्यूटर. इसमें से मैं आपके लाइव कमेंट्स में यहाँ से पढ़ता हूँ, ठीक है. और ये रहा मेरा छोटा सा मिनी ऑफिस. आपको टूर करा देते हैं. यहाँ पे सारी चीज़ें हैं. दिस इज़ कॉल्ड मिनी ऑफिस, ठीक है. तो यहाँ से हम करते हैं लाइव. तो होप मिलते हैं. चलो अब फाइनली एंड करते हैं. आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम ये एंगल ट्राई करेंगे. ये एंगल थोड़ा बेटर लग रहा है, पर दिक्कत ये है सामने में कंप्यूटर को नहीं देख पाता. ये जो सामने कंप्यूटर है ना, अगर मैं फ़ोन बीच में रख दूँ तो कोई नहीं, टाइम के साथ सारी चीज़ें सेट करेंगे. चलो मिलते हैं. बाय बाय.